Malvika? Yeah, fine, ma'am. Fine. How are Okay, you, ma'am? okay. I am fine. Thank you. Can you please introduce yourself with us? Yeah, definitely, ma'am. I'm Malvika. I'm from Jabalpur. I'm in Nepal, and Okay. I'm along with I'm a housewife, and I'm doing a direct selling company also. I'm doing the work from home only, and Okay. I'm in I'm in Modi Care. Yeah, Okay. it is a direct selling company, so I'm working in that as my Okay. part-time job. Okay. Very nice. See, my name is Manisha, and I have 13 years of experience in teaching field as an assistant professor and placement officer. During my work period, I have working with the management college and engineering college where I took classes of personality development programs and interview preparation skills as well as human resource management. I also conduct campus interview sessions off campus as well as in campus with the collaboration of different companies. So that's all about me. So she's the new one in my class. So Miss Shalini and Miss Richa, can you please introduce yourself one by one? Okay, Miss Malvika, can you please Yes, ma'am. put your mobile on a portrait mode? Oh, sorry, landscape mode. Okay. Your mobile To is search. on a portrait mode so that I we cannot see your face very well. So please put it on a landscape mode. From where we have to change, I don't know. अच्छा चल ठीक Because है. yesterday I connected with laptop, but now the same time my son class is going on, so Okay, I no have problem. to. That's No why. problem, no problem. It's okay. Okay. Yes, Miss Shalini, can you please introduce yourself to her? Miss Shalini? Hello everyone. Hello everyone. I am from Ghaziabad and I am a teacher in a play school, K.S. Bidri Memorial School. And my family background, my husband is an engineer and I have a son, uh, 11 years old son. Okay. Okay, thank you, Miss Shalini. Miss Richa, can you please introduce yourself? Yes, sure. I am Richa Srivastav. I live in Allahabad. I have done MBA with HR and finance specialization, and I have some experience in teaching. But right now, I am homemaker, and in my family, my husband is working as a senior sales manager. I have a daughter, and my mother-in-law is live with with us. Sorry, that's all. No problem. Okay. Okay, thank you all. Ms. Malvika, we have already started the class, and what I am going to cover in this class is the resume topic as well as group discussion topic today. Okay, so Okay. Okay. we are already covering what is resume. So, Ms. Malvika, can you please tell me what is resume? What is the difference between resume, curriculum vitae, and biodata? I think in resume we are specify about our qualification, our work experience, Mm-hmm. and in biodata, the personal information we have to give like family background and number of members and all that. Okay. And about okay. Now, I want to tell you is that there is a difference between biodata. You all know it very well. It is included all kind of personal experience which we can use it with the in the marital proposal. Okay, but if we are talking about the resume and curriculum vitae, there is a very minor and differences between curriculum vitae and resume. Miss Malvika, can you please put yourself in your mode? And whenever you want to say, you just unmute yourself. Okay. So the difference between curriculum vitae and resume is that in curriculum vitae we are only including our academic and personal information. For example, if we are someone is a fresher candidate,
Okay, so he or she have only that information which is related to the academic part or their personal interest, hobbies, strength, weaknesses. So these kind of, when these kind of information included in resume, your heading should be curriculum vitae. Okay, but if you have real work in experience, so that work experience included in the resume portion. So the main difference of curriculum vitae and resume is that if you are fresher one, you don't have any kind of work experience, real work experience, so your heading should be curriculum vitae. But if you have any kind of work experience, so you should include in heading as a resume. And of course, biodata is only related to the matrimonial purpose, your personal experience. So if you are applying any kind of job, you should not use the word biodata. Are we clear, everyone? Yes or no? Are we clear? Yes, ma'am. Yes. Yes. Okay, very nice. Now, tell me, what is the type of resume? Can anyone know it? How many types of resume? Yes or no? Can anybody No. know? No. Okay. No, ma'am. So, okay. So, I want to tell you is that there are three kind of resume. First is chronological or traditional resume. Second is functional resume, and the third one is fusion of that. So first is related to your personal thing, like CV. ठीक है, जिसमें आप सिर्फ where you have to include only your personal detail as well as your academic detail, and you are including these kind of detail into the reverse chronological order. Do you know reverse chronological order, or should I explain it? Yes or no? Should I explain Explain it? it. No, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Highest Yeah. qualification to lower. Yes, it is like that. Chronological, you know it one by one. Okay. But if we are saying that reverse chronological, it means that what is going in the current time. So you will have to include current to past. That is known as reverse chronological order. Okay. And what is popular in today's era, that is related to the reverse chronological order, what kind of information we are including in the resume. Next is functional resume. Functional resume is that where we are including only our working experience, specialization, or any kind of experience, awards, achievements, your achievements. When you are including only these kind of things, so it is included in the functional resume. Okay, but in today's era, you will have to use only third one, that is the fusion of both, combination of both chronological plus resume. So you will have to add both kind of information in your resume. First, your personal information as well as your functional or your work experience, your achievement, that kind of information. So you have the mixture of that. Okay, understand? Any confusion? Do you have any query? Hello. Do you have any query? Yes. Third kind of resumes. Please name them. It is a fusion of. Fusion means होता है Fusion of. mixture. हाँ, combination of both. ठीक है? आप combination of both भी you can say it. No problem for that. Anyone? Anything? Any query? Are we clear? Are you all clear? Shall we move further? Okay. Okay. So the next thing is elements of element and structure of resume. Okay, now tell me that what kind of information we should include in resume one by one. You have to say one by one, step by step. बताइए. Tell me. Miss Malvika, can you please tell me?
what should be the order? First, we have to write our name Okay. in front. Then we have to start with our current what we are doing currently. Okay. And Then the last experience, the before job, whatever you are doing, the okay. experience. And Then about your qualification. okay. Then the personal things like your awards, your achievements, your hobbies, and like that. Okay. Yes, Miss Richa, can you please tell me? Yes. First of all, there should be name, personal detail, and after that, what are the career objective? Okay. There, and then work experience, Okay. educational experience, Mhm. educational qualification, and what are the achievements, and our strength and weakness also should be mentioned. Okay. And after that, contact number, references like this. Okay. 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 Yes, Miss Shalini, what is your opinion about this question? Resume. In resume, what kind of order we will have to follow I think your first about the name, information? date of birth, Mm-hmm. and then a little bit of knowledge about your background, family background, Okay. where you Okay. belonging from, and then Mm-hmm. the current experience, job experience, Okay. last job experience, and some qualifications, your Okay. highest of qualification, higher qualification, Okay. and then school, Okay. and last, what is your achievement? Okay. See, now I'm going to tell you a formal way of creation of resume. Okay. So, yeah. Now, first would be heading. Of course, in heading, you will have to add your name, your contact number. If you have email ID, you will have to mention email ID, fax number, address of your place. Okay. So these, and as well as you will have to paste your passport size photograph. Okay, whether it is hard copy of your resume or soft copy of your resume. So initially you will have to include these section. ठीक है, हेडिंग में ही आपका रिज्यूमे और करिकुलम का भी हेडिंग आएगा. ठीक है. नेक्स्ट वुड बी योर पोजीशन सॉर्ट. Position sort, this section is only applicable when you will have to आप लोगों को थोड़ा बहुत पता है कि अच्छा चलिए मैं बहुत नॉर्मल से आपको हिंदी में समझा दे रही हूँ. पोजीशन सॉर्ट का मतलब होता है, ये बहुत डीप में फिर जाना पड़ जाएगा मुझे. पोजीशन सॉर्ट का मतलब होता है कि जब वैकेंसी खुद से ऑर्गेनाइजेशन जब निकालता है तो वो बहुत सारी वैकेंसीज एक साथ निकाल देता है. तो उस जगह पे आपको अपना पोजीशन सॉर्ट मेंशन करना है और जिस भी एरिया के लिए आप अप्लाई करें. फॉर एग्जांपल यू ऑल आर टीचर, ठीक है, and some institute release their vacancy of many subject. So at this kind of situation you will have to add position sort about your subject, that you are applying for geography subject, you are applying for Hindi subject or English subject. Okay, but if you are directly applying for job or giving resume to the institution or to any organization, this section is not applicable. Are we clear everyone? Yes. ठीक है, ये बात समझ में आ गई सबको कि कोई कंफ्यूजन है पोजीशन शॉर्ट को लेके? अगर आप डायरेक्टली जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वहां आपको पता नहीं है कि कोई वैकेंसी है या नहीं है, तो आप पोजीशन शॉर्ट नहीं डालेंगे. ठीक है, लेकिन अगर किसी कंपनी का वैकेंसी निकला है और आपको पता है कि वहां पे कौन कौन सी वैकेंसी आई है, तो वहां पे आप पर्टिकुलर किस जॉब पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए आपको ये सेक्शन इंक्लूड करना है, अदरवाइज नहीं करना है. आर वी क्लियर एवरीवन? आर यू ऑल क्लियर? हाँ, But I have a query. हाँ, In school there are some
criteria of the students, like pre-nursery, pre-primary wing, then senior wing or PRT. But when I want to job in pre-primary, then we Okay. will mention na. हाँ नहीं okay subject. See if you No, हाँ not subject. okay Suppose PRT section. yes, section. So you Because will I have want to join the PRT section, not for senior wing. So very first if I am going so to you submit are it, the नहीं you resume. are going to apply for HR department ना. और see जब भी कोई वैकेंसी आती है किसी भी जगह पे तो वो अपने डिपार्टमेंट के थ्रू भेजते हैं जो अच्छे इंस्टीट्यूट होते हैं वहां की मैं बात कर रही हूँ जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस या किसी भी जगह के होते हैं तो वहां पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की तरफ से वैकेंसी निकाली जाती है उनकी अपनी वेबसाइट में तो जब कभी अगर आप बहुत क्लियरली पता है आपको तो वहां पे आप मेंशन करिए अगर आप चीजें नहीं जान रही हैं और आपको अपनी बात कोई कन्वे करनी है तो आप वहां पे कर दीजिए मेंशन हाँ, वो कोई इतना हाँ, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है आई एम ओनली डिलीवरिंग हाँ, द जनरल इंफॉर्मेशन the general idea of writing resume or to follow some rules. Clear rules. everyone? Miss Richa, do you have any query? Miss Malvika, do you have any query? Ma'am. Okay. No, ma'am. Okay. So shall we move further? Okay. Now the next thing is career objective. Of course it is very important thing because it shows your enthusiasms to related to your career, related to your dedication. So you should mention career objective and it should be very positive, precise. Clear? मतलब precise और positive से आप समझ रहे हो ना बात कि बहुत ही शॉर्ट में जितनी शॉर्ट में आप अपनी बात को कह सकते हैं ठीक है उतना ही छोटा करियर ऑब्जेक्टिव रखिएगा बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन ड्यूरिंग इंटरव्यू every interviewer must ask this section question. Clear everyone? So you are very you will have to very careful to mention it whatever your career objective is. You should be very careful to choose the word formation or you will have to have very clear thought about your career objectives. There should not be any kind of confusion especially during interview. Okay, clear everyone? Okay. So the next thing is your work experience. If you have any kind of work experience you should mention it. In fact you must mention it and you must mention it in a reverse chronological order. For example, I have 13 years of experience in the teaching field. Okay, so I will have to mention first my current position and before that according to the जिस भी ईयर में मैंने जैसे जैसे काम किया उसे रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिवर्स ऑर्डर में मुझे मेंशन करना होगा और ऐसे ही यू विल हैव टू फॉलो इट. क्लियर? ओके. द नेक्स्ट थिंग इज योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन. अच्छा, वर्क एक्सपीरियंस में आपको अपने जो भी इफ यू आर अचीविंग एनी अवार्ड, any special certification through organization, special recognition through organization, so do mention these area also in the resume because it reflects your leadership quality and your positiveness and dedication towards the work. So do mention these kind of points also. Okay, the next thing is related to your educational qualification. When you are mentioning your educational qualification, you should categorize it. Categorize into two forms. First is academic portion and the second one is professional qualification. So first you will have to mention your professional qualification. Do you understand what is the meaning of what is the difference between academic qualification and professional qualification? Tell me, Miss Malvika, what is the difference between academic qualification and professional qualification? Ma'am, in academic, I think the schooling and all it will come, and the Okay. professional studies like MBA, MCA, like any professional course if you do, that will come in professional qualification.
नहीं, फिर से come again. I'm not getting your point. Sorry. Connection Academic is weak. academic qualification under this, the schooling, the place from where you schooling and all you have done, Okay. whatever awards, and the professional comes into the specific qualification like MCA, MBA, or in a particular subject if you have done any professional course, Okay. that will come in professional Okay. qualification. Okay, Miss Shalini, can you please give your opinion about this? Academic knowledge means the schooling and your higher education, that's it. But in professional training or Professional any degree like qualification. sorry, professional qualification means a kind of training or like B.Ed and TT. Okay. Okay. Any kind of training which will help you to join any field. Okay. That Miss is called Shalini, professional. can you please put your mobile far from your face, because your face is not visible. Yes, now it's okay. Yes, Miss Richa, can you please give your opinion? Yes, sure. Academic qualification is, I think, very necessary and mandatory for us, for everyone. And for professional qualification, the depend upon difference? the person. Difference is that academic is only the basic knowledge that everyone should have, but the professional knowledge is depend upon the person in which they want to specialize and they want to work in their core area. I think you are not getting my point. I'm asking what is the difference of qualification. If you have to categorize your degree. If you if you are categorize your degree according to professional qualification and academic qualification. So what kind of degree includes in academic field and what kind of degree includes in professional field? In academic, up to 12th degrees are included, and after that, in which area we are specialized, they are included in the professional knowledge and professional qualification. Okay. Thank you, everyone. But I would want to give you an idea about the academic and professional degree. Is that kind of degree which is directly related to your professional training. Okay? Any degree which is create for giving any kind of business training to you. So it is known as professional degree. For example, if you are doing BTech, so it is related to the engineering field. Clear? If you are doing MBA, it is related to the business management. Clear, everyone? तो इसी तरह से कोई भी ऐसी डिग्री जिसका डायरेक्ट लिंक किसी प्रोफेशन से हो, कोई आप सर्टिफिकेशन कोर्स करते हो, ठीक है, तो सर्टिफिकेशन कोर्स क्या होता है, जैसे आपने ओ लेवल किया, ठीक है, आपने कोई मार्केटिंग, ये डिजिटल ट्रेनिंग आजकल बहुत चल रहा है, मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग, तो ये सब क्या होता है, ये डायरेक्ट लिंक होता है किसी स्पेसिफिक बिजनेस को लेके, किसी स्पेसिफिक ऑक्यूपेशन को लेके. तो इस टाइप की जब आप कोई पढ़ाई करते हो तो वो डिग्री आपकी प्रोफेशनल डिग्री होती है. बट एक ऐसी डिग्री जिससे आपको सिर्फ नॉलेज मिले, वो आपकी अकेडमिक डिग्री होती है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप लोग बता रहे हो कि आपके अकॉर्डिंग जब तक आप स्कूलिंग कर रहे हो, दैट इज नोन एज academic degree. But if you are doing simple graduation with language subject is like MA, अगर आप किसी भी सब्जेक्ट से करते हो तो वो आपकी प्रोफेशनल डिग्री नहीं होती है, क्योंकि वो आपको पर्टिकुलर जॉब के लिए ट्रेनिंग नहीं दे रही है. आप हिस्ट्री कर रहे हो तो आप हिस्ट्री के बारे में सिर्फ जान रहे हो, उसका किसी जॉब में सिर्फ टीचिंग है, मैं मान सकती हूँ, लेकिन टीचिंग इज अलग, वो इट इज अ डिफरेंट क्राइटेरिया. उसके लिए अलग से आपको बीएड करना होता है, क्योंकि बीएड एक स्पेशलाइज्ड टीचिंग ट्रेनिंग होती है. सो आर वी क्लियर? आर यू ऑल क्लियर about this the criteria of academic and professional qualification? Miss Malvika, yes. Are you clear? Ma'am, I'm little bit confused because as you said now ki MA if we do MA in history, so it will not come in profession qualification. It will not come na qualification, वो academic में आएगा. But if we do MBA, then it will come in professional. हाँ, डिफरेंस मैंने आपको बताया है ना.
कोई भी ऐसा, जैसे एमए आप कर रही हैं, एमए का क्या Right. आपका क्या इसका विजन क्या होगा, आपका कौन सी जॉब आपको सिखाई जा रही, कौन सा ऑक्यूपेशन सिखाया जा रहा है एमए में, किसी भी सब्जेक्ट से आप कर रहे हैं, कोई ऑक्यूपेशन सिखाया जा रहा है आपको, उसमें आपको ये बताया जा रहा है कि आपको इससे ये जॉब मिलेगी, आप बताइए, उसमें कोई ट्रेनिंग मिल रही है कि आपको टीचिंग ऐसे करना चाहिए या आपको बिजनेस ऐसे संभालना चाहिए, नहीं, आपको सिर्फ नॉलेज दिया जा रहा है, ठीक है, Okay. सिर्फ Okay. आपको बताया जा रहा है। अगर आप एमए हिंदी से कर रही हैं तो हिंदी की नॉलेज दे दी जा रही है, आप इंग्लिश से कर रही हैं तो इंग्लिश की नॉलेज दे दी जा रही है, ठीक है, लेकिन कोई ऑक्यूपेशन नहीं बता रहा है, कोई बिजनेस या कोई उससे आपको जॉब नहीं मिल सकता है, ठीक है। Okay. And BCom also it will come in हाँ, बीकॉम ऑल्सो इन, यस, इन एकेडमिक, academic only. हाँ, लेकिन अगर आप जो है एमबीए कर रही हैं तो एमबीए क्या Right. होता है, वो आपको तरीका बताता है कि एक बिजनेस को कैसे आप, पूरी स्ट्रैटेजी बताता है, पूरे आपको किस तरह से रहना चाहिए, आपको पूरा एक एटमॉस्फेयर दिया जाता है, आपको ट्रेनिंग दी जाती है। बट आप एमए में कोई ट्रेनिंग करते हो, आप बताओ मुझे, कोई नहीं ट्रेनिंग करते हो ना, कोई ऐसे स्पेशलाइजेशन प्रोजेक्ट नहीं बनाते हो, कोई फील्ड वर्क की ट्रेनिंग नहीं आपको दिलाई जाती है, Right. कोई कॉन्फ्रेंस, कोई वर्कशॉप आप नहीं करते हो, ठीक है। तो देयर इज अ डिफरेंस कि जब भी आप प्रोफेशनल का मतलब होता है कि कोई प्रोफेशन आपको पढ़ाया जा रहा है, मार्केटिंग में बिजनेस पढ़ाया जा रहा है, इंजीनियरिंग आप बीटेक कर रहे हो तो आपको क्या पढ़ाया जा रहा है, उसमें इंजीनियरिंग की फील्ड बताई जा रही है। अब उसमें भी कई फील्ड हैं, आप सीएस ले रहे हो तो कंप्यूटर साइंस की फील्ड वो, लेकिन आप उसमें कंप्यूटर साइंस की पूरी ट्रेनिंग बताई जा रही है कि कैसे आपको इंजीनियर बनना है। तो जो भी ऐसी कोई भी डिग्री, ऐसा कोई भी सर्टिफिकेट जो कि आपको डायरेक्ट देता है कि आपको बताता है कि आपको इस फील्ड की जॉब इससे मिल जाएगी, तो वो होगा। लेकिन जब भी कोई आप एमए किसी लैंग्वेज से करते हो तो वो क्या होता है कि आपकी कंपटीशन की तैयारी करेगा कि आप जो लेकिन आपको पर्टिकुलर एरिया नहीं बता रहा है, बात समझ Okay. रही Right. है? Right. Right. नाउ यू आर क्लियर? Okay. Ma'am, like MA LLB, it will come in professional then. हाँ, एमए LLB is लेकिन वो also a एमए professional एलएलबी course. नहीं होगा, दैट इज अ एलएलबी, वो एलएलबी अपने में एक डिग्री है। Okay. एलएलबी जो है वो ग्रेजुएशन है, जैसे बीटेक है, बीए आएगा आपका एकेडमिक में, एमए आएगा, हाँ, लेकिन आपका एलएलबी क्या है, LLB वो professional. लॉ का दिया रे, और उसका मास्टर आप करते हो वो एलएलएम कहलाता है। जैसे आप बीटेक करते हो तो ये आपका ग्रेजुएट है, ग्रेजुएशन है, लेकिन एमटेक करते हो तो वो आपका वो कहलाता है पोस्ट ग्रेजुएशन। उसी तरह से एमबीए आपका मास्टर डिग्री है, बीबीए आपका ग्रेजुएशन है। तो अब Graduation. क्लियर है, Okay. ठीक है, अब Yes, क्लियर है ma'am. सब लोग को? Yes. चलिए, आगे बढ़ते हैं। वर्क एक्सपीरियंस हो गया, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो गया। नाउ प्रोजेक्ट डिटेल ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आएगा। हर एकेडमिक में जब भी आप कोई प्रोफेशनल डिग्री करते हो, कोई सर्टिफिकेट करते हो, तो आपको एक प्रोजेक्ट बनाना होता है। वो जो किए होंगे उसमें एक टॉपिक दिया जाता है, उसका आपको फील्ड में वर्क करना होता है, और उस वर्क से रिलेटेड थ्योरी आपको प्रोजेक्ट डिटेल में प्रेजेंट करनी होती है। वो ड्यूरेशन होता है, कोई 1.5 महीने का होता है, कोई 2 महीने का होता है, वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा कोर्स कर रहे हो और कौन से किस टाइप का प्रोजेक्ट आप बना रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट इज योर स्पेशल स्किल्स। स्पेशल स्किल्स इज रिलेटेड बेसिकली टू योर योर इफिशियंसी, कि आप किस एरिया में बहुत इफिशियंट हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करती हूँ तो मेरी स्पेशल स्किल मेरी इंग्लिश टीचिंग है, ठीक है, बिकॉज आई हैव नॉलेज एंड आई एम डूइंग इट, ठीक है। तो वो मेरी एक स्पेशल स्किल हो गई, मैं इंग्लिश बोलना जान रही हूँ, इंग्लिश लैंग्वेज पे कमांड है, वो मेरी स्पेशल स्किल है। मैं टाइम मैनेजमेंट, ये मतलब मेरा है। तो उसी तरह से मतलब you will have to find your special skill regarding anything, regarding your personal attributes, regarding your professional attributes, okay, जो भी होगा your it is related to your talent with your work, ठीक है। सो वो आपकी स्पेशल स्किल में आएगी। क्लियर एवरीवन? नाउ नेक्स्ट इज वर्कशॉप, सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंसेज। ये वर्कशॉप, सेमिनार, कॉन्फ्रेंसेज आप जानते ही हैं, किसी टॉपिक पे एक बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज किया जाता है। अगर आप इस टाइप के वर्कशॉप और कॉन्फ्रेंसेज, सेमिनार्स अटेंड किए हुए हैं तो जस्ट डू मेंशन इट ऑल्सो, बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स दैट यू आर अ वेरी एक्टिव काइंड ऑफ पर्सन एंड यू आर interested in your field, and you are dedicatedly doing this kind of activity also. So it shows your multi talentedness, okay.
and the next one is your achievements and award. Of course it is related to your excellency. अगर आप किस फील्ड में किस वर्क को लेकर बहुत एक्सीलेंट हो, बेस्ट हो, तो वो आपके अचीवमेंट्स और अवार्ड होते हैं, वो आपको जरूर मेंशन करना चाहिए. उससे आपकी इफिशियंसी और इफेक्टिवनेस शो होती है. ठीक है. Next is your activities and interest. Activities and interest का मतलब होता है, just a second, I'm sharing my screen. Okay, see, activity and interest का मतलब आप already जान रहे हो कि आपकी किसमें ज्यादा interest होता है. Okay, tell me Malvika ji, what is your interest? Mrs. Malvika? Yes. Interested in cooking, and I love to make new friends. I'm normally a person who can make a good group, and we can organize anything. So I love to do that. Okay. I'm interested. So you are doing your business also, right? Yes, ma'am. So can you tell me about the interest to your business, your professional one? Yeah, sure. Actually, I'm in a business in which there is a no investment. Okay, and there is a no risk. Malvika, okay. I'm not asking about your business. I'm asking your interest and efficiency about your business to doing it. How you are implementing your business. How I'm doing. How you are implementing your business. Implementing means आप कैसे उसे execute करते हो. Okay. Simply, ma'am, it is actually the main purpose of joining this business is that I don't want to leave my kids at home, and earlier actually I done the jobs outside also, but the main. See, Malvika ji, I'm asking how you are implementing your job. Implementing, execute कैसे? Execute in the sense आप अपने आपका बिजनेस का आइडिया आया, ओके, अब आप उसको बढ़ा कैसे रहे हो, क्या कर रहे हो उसके लिए, कैसे उसको बढ़ा कैसे रही हो, कैसे एग्जीक्यूट कर रही हूँ. फॉर दैट in my group, in whatever group I'm having, I'm conveying I'm sharing my whatever achievements I have done. Suppose in last 6 months, whatever achievements I have achieved from this business, so I'm sharing this with my groups. And if anyone want to interested, and if anyone want to do something, want to earn something, be at home and want to earn something, so I am explaining the plans and all, whatever the company is offering us. I'm explaining these things to them. And okay. See, actually time is running fast, so I thought I have to complete first. Okay. So activities और interest में होता है कि आपको कौन सा काम ज्यादा अच्छा लगता है करना. जैसे आपका पैशन बिजनेस है, ठीक है, तो आप उसमें बता सकते हो कि इसमें आप उसे इंक्लूड कर सकते हो, अपने पैशन को, अपनी हॉबीज को. क्लियर. फिर नेक्स्ट एक्टिविटी एंड इंटरेस्ट इज रिलेटेड टू योर पैशन एंड रिलेटेड टू योर हॉबीज. ओके. रेफरेंसेस जब आप रिज्यूमे देते हो तो आपको ये हर कंपनी या हर इंस्टीट्यूट के लिए नहीं होता, लेकिन अगर आप किसी रेन्यून कंपनी या इंस्टीट्यूट में अपने जॉब एप्लीकेशन को फॉरवर्ड करते हो, तो वहां आपको से रेफरेंसेस पर्सन के मांगे जाते हैं. ठीक है. इसमें क्या होता है कि आपको उन लोगों के बारे में बताना होता है, जैसे आपके कोई कलीग हो, आपके कोई नोन हो, नोन इन द सेंस आपका ब्लड रिलेटिव नहीं होना चाहिए, आपके साथ किसने काम किया है, आप उनके बारे में. जैसे फॉर एग्जांपल अब हम लोग हैं और हम लोग एक दूसरे को जान गए हैं, ठीक है, तो कभी इन फ्यूचर हमारी टीचिंग से रिलेटेड आपको कभी कुछ करना होगा तो आप मेरा नंबर दे सकते हैं या अपने बैचमेट्स का दे सकते हैं. बट रिमेंबर दिस कि आप जिसका भी नंबर दें वो बहुत ही ट्रस्टवर्दी हो, बिकॉज हर और जो भी अच्छे ऑर्गेनाइजेशन रेफरेंसेस मांगते हैं वो जरूर आपका फीडबैक लेते हैं, और अगर उस पर्सन ने आपका फीडबैक गलत दे दिया, ये बोल दिया कि अरे वो बिल्कुल बेकार है, वो तो टाइम से आता ही नहीं है,
ठीक है, वो पंक्चुअल नहीं है, वो बहुत ही एंगर पर्सन है, तो वो आपके सिलेक्शन पे आ सकती है बात, ठीक है। तो बहुत ही सोच समझ के इस रेफरेंस में पर्सन को दीजिएगा। नेक्स्ट वुड बी योर पर्सनल डिटेल। इसमें आपकी पर्सनल डिटेल में जो मैरिड है अपने हस्बैंड का नाम देंगी, अपना आपको कौन सी लैंग्वेजेस आता है, आपके फोन डिटेल्स देंगी, मतलब कॉन्टैक्ट नंबर देंगी, और मैरिटल स्टेटस, ये जो छोटी छोटी इंफॉर्मेशन होती है वो सारी आप इसमें मेंशन करेंगे। नेक्स्ट कम डिक्लेरेशन पार्ट। डिक्लेरेशन पार्ट का मतलब होता है कि दैट यू आर डिक्लेयर दैट अबव ऑल इंफॉर्मेशन are correct and you are a very trustworthy person. So make sure that your information should be relevant and fact based. Okay. The next one is date, place and full name. सबसे लास्ट में आपको डेट, करंट डेट, प्लीज ये जिसका भी हो रहा है ना वो आप लोग म्यूट कर लीजिए अपना। डेट आपको डालना है और करंट प्लेस डालना है और अपना पूरा नाम उसमें मेंशन करना है। सो ये दिस इज ऑल अबाउट करिकुलम वीटा और रिज्यूमे, ठीक है। नाउ वी विल स्टार्ट द जीडी सेशन। टिप्स हम नेक्स्ट एडवांस क्लास में बात करेंगे बिकॉज वी डोंट हैव टाइम राइट नाउ। सो लेट्स स्टार्ट विद जीडी। नाउ यू नो द टॉपिक वेल, right? Have you all prepared about the GD? Okay. So you have 5 to 10 minutes for GD, and after that I will give your feedback. Okay. So let's please unmute yourself. Now I am muting myself and you all are discussing. Okay. So your time start now. Everyone please unmute yourself. Who is going to initiate the session? Hello. Hello. Okay. What is the topic? Our topic is the government job versus private job. Okay. So I have, tell many things. Now it's your turn. So start one by one. Your time start now. There is a 5 minutes. You all are have to have conversation or discussion. So चलिए, मैं कुछ नहीं बोलूंगी, आप लोगों को बोलना है आपस में। बोलिए, start करिए। There are always a confusion between the young generation that what are the better, government job or private job. But I think both the job are the good. It depends upon the person in which area they want to make their career, I think. And what are their preferences, what are their liking, and what are their professional qualifications. It depends upon the person. Both the jobs are their positive area and their negative area as well as they have benefits as well as they have their drawback. Yes, you are very much true. But in earlier time, the people go for government job more. They want if for marriage also they are searching for government peoples. But nowadays the thinking is very much changed, and the in private job also the main difference between those jobs are government think to be settled job, means after retirement or when you are not working, then also you are getting something. But in private job uncertainty is there. If you are working for some time and you're not, then if you leave the job, the company will not give you anything after that. That's the main difference, I think. Yes, And you're true. But I think there is no more chances in the government job. There are more better chances in the private job in comparison to government job. Government job wants to longer time to miss किसी को higher post देने के लिए. But in private job, if you have a skills, you have a professional qualification, then you have to miss अच्छे position पे in very short time you achieve the bigger position, senior position in comparison to government job. But if you go to current situations like in Corona time, most of the private company, they stop working and they remove the peoples. But in government job, although they are cutting some salary from government employees also, but they are not removing. They can't remove. So the job is very much fixed for them. So they are very happy with that. We are in government job, so we are. They are doing so also. They are doing some extra work also, like that. You are right, but in a government job, see, there is very beneficial job
because there is a very permanent job and there is a fixed salary, increment, TL, Leaves and LD, holidays. leaves and all are good. But the main problem is that the employment is very it means that the job vacancies are very short, limited, Very and limited. our population is very huge. So the main problem is that. Nah. And I think if you are hard worker, if you are talented, then you will get a very good job in private sector also. In private sector, if you are talented, and I'm not telling about some people who are in very small post. It means in a higher rank honors like CEO, HR in highest post, they are also settled. They have also gained some PF in higher companies and also increment. So their salaries are very good comparison to the government employees. See, the increments are very little in government job like clerk. Now, in a small post, their condition are also worst, and they take घूस को क्या कहते हैं? I don't know. They Corruption is very much. corruption. So in the No, it's not government job, corruption. there is See, Miss Shalini, it's No, not corruption. yes. It's It's bribe. not corruption. Bribe. Yes. Bribe. It's bribe. Bribe. घूस को Bribe. करप्शन Okay. नहीं बोलते. करप्शन So- एक तरह से बहुत सारी चीजें हो जाती हैं. ब्राइब है. So because of small income, so they can do these things, and in a higher in a private job, they are very white collars. They are hard worker, and if it is depend on your talent. Both job your are very choice, very and your choice. yes, both job are very good, but it depend on your qualification. That's it. Yes. You have time. More. Discuss it. So And I think a government. if You have already topic one day before. okay, and if we see in a government job, the higher position, there is so much hard work on. There are so many pressures on the higher rank officers like IAS officers. They have no That thing I want to. holidays. They are very hectic schedule also. They have Right, so right. much pressure on of the politicians also. Nah, they That's are, the government. In government job also, you have to work hard. Yes, It's not. yes. It's not true ki in private job only. But what I am thinking, because I am a wife of a private employee, so I know he's not able to give time to my kids. He's not able to give time to my. So that's why I'm saying ki government job. Yeah, that the point ki now jobs are very less, and the category given by the classes given that for journal it will come very last. They are offering for SSC the peoples. So for that reason, and for government, if you like in if you go for a government job, the selection procedure is very longer. Yeah. Like in private job, it will take less time to select any candidate, and Yes. the package is also going good in private. Yes. Yes. Okay. But Okay. in government- Okay, everyone, thank you so much. Now, who is going to conclude the session? Mhm. Not Richa. She has already initiated the session. So we have two options, Miss Malvika and Miss Shalini. It's your choice who is going to conclude the session. I don't know. I don't know.
Okay. Okay, Yes. I will conclude. I will try. No Okay, problem at all. as we all discuss about the government job and private job, as I think both job is equally important, and if we are in Indians, definitely we go for a government job because it is Yes. somehow it is more benefit for a country, Yes. and the some correction should be done, like for selecting the candidates, and it should be equal for all, and the examination procedure and the time taken by it will be less, and rest the other way the private job is also very good. The new young generation, they go for a private job more as compared to government job, so they are that job is also very much good, I think. Okay. So Okay. both Thank are you. equally important. Okay, okay. Thank you, everyone. Now it's my turn to give you your feedback about the group discussion or about your strength and weaknesses. So, strength is that you all are tried very well and try to speak in English. So, I'm very impressed for this. And a little bit thing what I have noticed, you will have to improve yourself about this. So, one by one, I will give your feedback. Okay. So, first is about Richa. Can you please unmute yourself? Okay. The thing Yes, is ma'am. that you're starting when ever your activity session is going on, your starting should be very formal. Okay. And there are certain procedure what we are following it. So, just say for example, if you are going to start the session, so you should start with your introduction first. It is not too lengthy introduction. It should be at least you should say about your name and about the topic information, what the and about first your name, then what kind of activity you are going to do, and on which topic you are going to discuss. So these three are the very mandatory point you will have to follow to initiate the session. Clear? And after that you will have to start giving your opinion about the topic. Okay, understand it? Okay, Now, okay. I will try. this is the way you will have to follow in future in the advanced classes. Now, the next thing is you will have to improve your pronunciation portion. Okay, Okay, you okay. said a career word, you are pronounced it as a carrier. Carrier is in the bicycle. जो बाइसिकल के पीछे Hmm, नहीं होता जिसमें हम लोग कैरियर का मतलब होता है समथिंग टू hmm, कैरी, hmm, a thing hmm, which have carrying something, तो वो carrier होता है. But hmm. what we are related to professional thing, that word pronounced Career. career. Okay. Okay. Next is you are interrupting to Malvika and Shalini. See, when the discussion is going on, you will have to follow that someone is finishing their point and then you will have to say your point. Don't intervene anyone, otherwise he or she will not giving his point very well. At least first listen to them, and then if you feel that you are forgetting your point, just note down it your point, and when someone finished it, then you say your point. So you all will have to follow this rule also. Clear, everyone? Now, next is you are saying Hindi word in the activity session. See, when I am trained you, I am giving some information in that session, that section. You are allowing a little bit saying Hindi word, but in activity there is a compulsory to all of you. You will have to follow English language. Okay, Okay. so be Okay. ready in the next session, in the Okay. advanced session, to speak Hmm. only in English in the activity session. Now, the word you are using, this is किसी private job, something like that. के, को, ये सब word आपके बीच में आए थे. ठीक है? And your eye contact. See, when you are saying something, your eye contact should be to your camera, because यहाँ पे हम कैमरे से बात कर रहे हैं, तो आपका जो आई कांटेक्ट कैमरे की तरफ होना चाहिए. बट आप लोगों के आई कांटेक्ट कभी ऊपर देख रहे हो, कभी ऐसे देख रहे हो, शायद आप लोगों ने नोट्स रखे हैं बगल में तो आप पढ़ रहे हो उसको. So this is the wrong way. It shows your negative, attribute, your attitude, कि आपको नहीं, आप नर्वस हैं बहुत ज्यादा. वो चीज धीरे धीरे इंप्रूव होगी, बट इन सब पॉइंट्स पे आपको नेक्स्ट टाइम फॉलो करना है. क्लियर?
Now comes on the Malvika. ठीक है, Malvika, Richa, you can mute Yes, yourself. ma'am. Malvika, same thing Yes, you ma'am. are also have done in your activity session. You will have to improve your eye contact. Same problem also Yes, ma'am. will, in your section also. The one thing you are doing it again and again, you are touching your nose and your lips. Hmm? It shows your nervousness. You will have to, exclude these kind of activity. So don't do it in Okay. the next activity session in the advanced class. Yes, Now, ma'am. you Okay, are ma'am. again saying a word after every sentence. ये अक्सर आ जा रहा Right. था. आपको ये a word showing Yes, yes. is also, shows your nervousness, or it shows that you Mm. are not prepared well. See, if I Prepared. am going to give you a spontaneous topic, it is expecting from you all. But Mm. when Mm. I have already given you the topic of the group discussion, so you have to prepare very well. So next time you will have to Yes. focus this also. You should not say uh. उसके बाद Okay. आपने कहा था ट्रू की वर्ड आपका अक्सर आ रहा था हिंदी का. तो आई नो ये सब आपके वर्ड्स हैं जो आ रहे थे. आपने शालिनी जी को Okay. इंटरप्ट किया था, वो कुछ बोल रही थी, आपने बीच में उन्हें इंटरवीन कर दिया था, उनको कट करके अपने पॉइंट्स रखा था. नो, फर्स्ट आपको दूसरों को सुनना है Okay. पहले, उसके बाद आपको अपनी बात रखनी है. नाउ कम टू द शालिनी. Malvika, you can mute yourself. Yes, ma'am. Shalini, your first Yes, ma'am. lesson, first feedback is that you are joining the session in a very late. ठीक है, इन अ वेरी लेट सेक्शन. आपका जब एक तरह से आधा चीज चला गया था ग्रुप डिस्कशन, उसके बाद आपने ज्वाइन किया. नहीं, आप लोगों को ये चीज ध्यान रखनी है कि बहुत देर में अगर आप आ रहे हैं, इट मीन्स यू आर नॉट प्रिपेयर्ड वेल. ठीक है, और यू आर वेरी मच नर्वस. तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जब भी ग्रुप डिस्कशन होगा तो ट्राई टू इनिशिएट द सेशन. अगर वो भी इनिशिएट आप तब करेंगे जब आपको टॉपिक अच्छे से पता होगा. ऐसा भी नहीं करना है कि हमें सामने दिखना है, आप बोल तो रहे हैं लेकिन आपने गलत बोल दिया, तो वो भी बैड इंप्रेशन डालेगा. एक सेकंड पहले एक्चुअली जब दो बात कर रहे हैं ना तो फिर बीच में बोलते नहीं बन रहा था. नहीं, वही मैं कह रही हूँ कि उसमें आपको इस तरह से स्टार्ट करना है, कैन आई से समथिंग. ठीक है, इस तरह से, या आप बोलना कुछ नहीं है, आपको इस तरह से हाथ करना है, इस तरह से करना है. ये जो जेस्चर होता है ना, बोलना मुंह से नहीं, आपको अपनी बात जेस्चर से प्रेजेंट करनी है. ठीक है, आप ऐसे उंगली दिखा दीजिए, हाथ दिखा दीजिए, दैट एवरीबडी कैन अंडरस्टैंड दैट यू वांट टू से समथिंग. सो आपके जो नेक्स्ट लोग रहेंगे वो खुद आपको इनिशिएट करे. आप लोग एक दूसरे को, जैसे आप लोगों की ये आप लोगों के अंदर भी ये कमी थी, अगर शालिनी जी नहीं खुद से पार्टिसिपेट कर रही थी तो आप उन्हें इनवाइट करते कि ओके शालिनी मैम, कैन यू प्लीज गिव योर ओपिनियन अबाउट दिस टॉपिक. तो इससे क्या होता है, इससे शो होता है कि आप बहुत एक्टिव पर्सन है और आप बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली पर्सन है. आपको दिख रहा है कि कोई नर्वस है तो आप फिर भी उसको बूस्ट कर रहे हैं, इंकरेज कर रहे हैं बोलने के लिए. तो ये एक अच्छा तरीका होता है अपने आप को एज ए लीडर प्रेजेंट करने का. ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम से आपको इस बात का भी ध्यान देना होगा. करके something and na अक्सर आ रहा था, so that you can understand it. You are saying okay now, so you will have to focus these Hindi word also. Okay, so that is I know it is a expression of your in every sentence, after every sentence you are saying this type of Hindi words, but you will have to remove it. Okay, now, the one thing I would like to tell you is that you are, when you are seeing it, you are taking There is so disturbance. mute yourself. Ma'am, your voice is not coming. Please unmute yourself. Unmute yourself. Hello, am I audible? Yes, Okay. ma'am. Okay, so one thing you will have to focus when you all will have to participate, not in only in one time, and you are giving saying something like a essay form. No, you will have to participate at least 2 to 3 times with a minimum pause. मतलब कुछ कुछ देर पे आपको बोलना है, लेकिन बोलना है, थोड़ा सा बोलना है फिर रुक जाना है, फिर थोड़ा सा बोलना है फिर रुक जाना है. ऐसा नहीं कि एक ही बार में आपको ऐसे अपनी कोई प्रेजेंटेशन आप देने यहाँ नहीं आई हैं
तो आपने क्या किया, जब आप तो पहले बोली नहीं, आपने सोचा कि चलो ठीक है पहले उन लोग को बोलने, तो ऐसा नहीं होता है, आपको खुद पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। और उसका तरीका मैंने आपको बता दिया, जेस्चर से करना है, मुंह से नहीं करना है, बोल के नहीं करना है। और दूसरा आपको एक चीज ध्यान देना है कि ऐसा नहीं कि एक ही बार में अपने सारे पॉइंट्स बोल दो। अक्सर ये चीज होता है कि कहीं बाद में दोबारा मौका मिले ना मिले तो लोग क्या करते हैं कि एक ही बार में, जैसा कि मैं शालिनी आपने किया था, तो ये चीज आपको ध्यान देनी है कि नहीं, थोड़ा थोड़ा बोलिए, कई बार बोलिए। जैसे मालविका जी बोल रही थी, ऋचा जी बोल रही थी कि बीच बीच में पार्टिसिपेट कर रही थी, इससे क्या होता है, समझ में आ रहा था कि दैट बोथ आर वेरी एक्टिव। एक्टिव आप भी थी, लेकिन आपको थोड़ा सा तरीका, आपका थिंकिंग अभी गलत अलग था कि आप इंटरप्ट नहीं करना चाह रही थी। बट इसमें थोड़ी थोड़ी देर पे पार्टिसिपेट करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो वो तरीका आपको पता है कैसे पार्टिसिपेट करना है, विद द जेस्चर फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, कंक्लूजन में क्या होता है, मिस मालविका मैं आपको बताना चाहूंगी, ये आपका पॉइंट था। कंक्लूजन Yes, जब ma'am. हम जीडी का करते हैं, शालिनी यू कैन म्यूट योरसेल्फ। मालविका जी जब हम जीडी करते हैं, जीडी करते हैं, तो उसमें जब कंक्लूजन करते हैं तो कंक्लूजन में हम पॉइंट बताते हैं जो कि जीडी में इंक्लूड किया गया है, और सबके पॉइंट लाते हैं, Okay. ठीक है। इट इज अ Okay. disagreement and Okay. agreement point, sorry, agreement and disagreement point. It can be both, but you will have to include only the point which is taken in during the GD session. Clear? बट आपने क्या Okay. किया था, आप Okay. अपने थॉट्स डाली थी अबाउट द टॉपिक, Right. कि आपको क्या Right. लगता Right. है, क्या आजकल चल रहा है, वो आपने एज ए प्रेजेंटेशन दे दिया था। बट जीडी के Okay. कंक्लूजन में प्रेजेंटेशन नहीं होता, उसमें आपको कंक्लूड का मतलब ही होता है कि जो कुछ अभी आपने किया है, या कहीं का भी, जैसे मान लीजिए कंक्लूजन हम एक आंसर लिखते हैं, तो आंसर क्या लिखते हैं, पहले हमने पॉइंट सारे दे दिए, कंक्लूजन में क्या हम बताते हैं कि जितने पॉइंट्स हमने दिए उसी का एक ब्रीफ कंसाइज फॉर्म दे देते हैं। तो यहाँ पे भी जीडी में भी Okay. आपको ध्यान रखना है कि जो पॉइंट्स है उसको आपको कंक्लूड करना है, उसको उन सारे पॉइंट्स को आपको इंक्लूड करना है। तो इसलिए सबसे बढ़िया तरीका होता है कॉपी पेन रखना चाहिए, और अगर कोई पॉइंट्स रख रहा है तो उसको नोट करते चलिए, कि अगर मतलब आपको कहीं करना पड़ गया तो आपके पास पॉइंट्स रहें, ठीक है। So that's all. Okay, ma'am. Okay, ma'am. Any query, any question? No, ma'am. So thank you so No, much. ma'am. टाइम भी हो गया है। Okay. Okay, so I will give you the recording of this class. Okay, so you will find it and see it, and find your feedback by yourself also. Okay, so thank you so much, everyone. See you Thank you. in the Okay. next class. Okay, Day after bye. tomorrow. Okay. Okay, bye. 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 Okay, Bye. have a nice evening. Bye, ma'am. Bye.